Hello everyone, welcome back. Today we will discuss types of capital accounts. Types of capital accounts. Whenever we are discussing partnership firm or partnership accounts, we always discuss capital accounts because capital account is what represents the partners. So we have two types of capital accounts. We have two types of capital accounts. Number one is fluctuating capital account. Fluctuating capital account. Fluctuating capital account, as the word reflects, fluctuating. Fluctuating word literally came out from fluctuations. Fluctuations is something that keeps on changing. So this is what a fluctuating capital account means. So when different transactions take place, when different transactions related to capital, when different transactions related to capital take place, they are recorded. They are recorded in the books of accounts, and every time any transaction takes place, and every time any transaction takes place, the balance of capital account changes. Balance of capital account changes. So fine. So every time the balance changes, we call it a fluctuating capital account. For example, suppose A started business with cash. A started business with cash. When A started business with cash, balance is say 20,000 rupees. Okay. Now what happened? Now, one is A started business with cash. Second is salary is given to A. When salary is given to A, then salary is added to partner's capital account क्योंकि ओनर को कैश तो देना नहीं तो हमारा बैलेंस becomes 30,000. Now, next event happening, owner made some drawings. Drawings made by A. When A has withdrawn money, suppose he withdrew 5,000 rupees, so balance of cash becomes 25,000. Okay, so what we are doing here, a transaction is happening, and every time a transaction is happening, balance of accounts, capital account is changing. So when this happens, we call it a fluctuating capital account. Okay. Now what a fluctuating capital account looks like. So a fluctuating capital account looks something like this. Fine. We have three columns, four columns. We write particulars, amount, particulars, amount. This is more like a ledger of a capital, like you did in class 11.
ठीक है, so this is the debit side, this is the credit side. Now the balance of capital is always credit, since capital we take it as a liability. So we will write by balance BD. Suppose started with cash, balance was 20,000, so 20,000. Now everything that is given to the partner is added to capital, moves to the credit side. For example, we give interest on capital to partners. So by interest on capital, interest on capital goes to the credit side. Again, balance changes. Then suppose we give salary to some partner. So salary given, again balance changes. Commission given, again balance changes. And profit and loss distributed among partners, we call it profit and loss appropriation. Again balance changes. Partner withdraws some cash to drawings. ठीक है, balance changes. Interest on drawings is charged, balance changes. So every time we do something, and this is where we get the final balance. So this is what a fluctuating capital account looks like, because all the events that are happening related to the owner, we record all that in capital account. वो सब कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड हो रहा है, और इसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहेगा साइमल्टेनियसली. सो दिस बिकम्स अ fluctuating capital account. Fine. Now let's see the other type, fixed capital account. What is a fixed capital account? Fixed capital account means capital remains fixed. When capital remains fixed means capital needs not to be changed. अब कैपिटल को चेंज नहीं करना है. What does this implies? Capital account not to be changed. Balance not to be changed implies कि जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस BD, सेम शुड बी बाय टू बैलेंस CD. ये BD और CD बैलेंस shall be same. Okay, so this is what fixed capital account means. Now क्योंकि हमें BD और CD ब्रॉट डाउन और कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस को सेम रखना है, कैपिटल बैलेंस नीड नॉट चेंज, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम ओनर से कैश में डील नहीं करते. ओके, वट एवर इज टू बी गिवन, हमने अभी तक यही पढ़ा है, वट एवर इज टू बी गिवन टू पार्टनर्स is added to capital account. Whatever is to be taken from partners is taken out from capital accounts. लेकिन अब कैपिटल को यहाँ पर रखना है फिक्स. Now how do we deal with it? In these cases, to deal with owner, we open a separate account named current account. Okay, तो अब हमने ये यहाँ पर एक करंट अकाउंट को मेंटेन किया. नाउ ये जो करंट अकाउंट है हमारा, दिस डील्स विद एवरीथिंग अदर देन कैपिटल. Whatever transactions are happening related to owner other than capital investment, they all take place in current account. For example, let's suppose current account has some balance. Since this represents the owner, this will also have a credit balance only. Now, when this happens, अब owner को हम जो भी दे रहे हैं, suppose we are giving interest on capital to owner, we are giving salary to owner, we are giving commission to owner. Okay, we are distributing profit to owner. Profit and loss appropriation account. All this moves to the credit side. Fine. Since it is to be given to the owner, अब ओनर से जो भी हमको लेना है, चाहे वो ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, all that moves to the debit side. Okay, and the balance is carried forward.
तो इसके लिए we prepare a current account and all transactions take place. So same thing is happening. Earlier what we were doing, we were giving salary, commission, everything to owner. लेकिन पहले हम वो चेंजेस करंट अकाउंट में ही कर रहे थे जिसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट हो रहा था. दैट इज व्हाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. बट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, in case of fixed capital accounts, we prepare two accounts, a capital account and the current account. Capital account only takes the balance of capital, that's it. Capital is the investment made by the owner. Whatever transactions are happening during the year, those transactions we deal with in a separate account called current account. Okay, so everything else other than capital, everything else goes to current account. That is why it is known as fixed capital account, because capital balance remains fixed. Now, one important question is, does the capital balance always remains fixed when we are maintaining fixed capital accounts? When we are maintaining fixed capital accounts, क्या ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है? So the answer is no. Why the answer is no? Because fixed capital account means that all transactions other than capital move to current account. But there are two situations. There are two situations under which in which balance of capital changes. There are two situations in which balance of capital changes. Situation number one, introduction of additional capital. Introduction of additional capital. Now what happens here, जब additional capital आता है तो उसको तो करंट अकाउंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन का हमारा जर्नल एंट्री ही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है. और हमारा कैपिटल अकाउंट कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल मूव टू करंट अकाउंट. दिस इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट एनी अदर ट्रांजैक्शन. तो ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा. फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल. जब ओनर कैपिटल को ही विड्रॉ कर लेता है, इन दैट केस हमारा कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा. Okay, so these two situations, when owner introduces additional capital, second is when owner withdraws capital, these two situations affect the capital account. So only when any of these things happens, हमारा capital account balance change होगा. Under normal circumstances, it remains the same. Rest everything, all transactions other than capital, they move to current account. Okay, so all transactions other than capital move to current account. कैपिटल में चेंजेस सिर्फ इन दो ट्रांजैक्शंस की वजह से आएगा. रेस्ट एवरीथिंग मूव्स टू करंट अकाउंट. ओके, सो इसीलिए जब भी हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को देखते हैं, difference becomes very important. In fluctuating capital account, only one account is maintained, and that is capital account. In fixed capital account, two accounts are maintained. One is capital and the other is current account.
In fluctuating capital account, balance keeps changing. बैलेंस चेंज होता रहता है. इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस डज नॉट चेंज. ठीक है, तो ये हमारे मेन डिफरेंसेस हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में. नाउ इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, जब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा हमने क्रेडिट साइड में लिया कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी. हमने ओनर को दिया उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमने ओनर को दिया उसका सैलरी. हमने उसको दिया कमीशन. हमने उसको दिया प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर. तो P&L एप्रोप्रिएशन. ठीक है, जब हमने कैपिटल में से निकाला, हमने निकाला ड्राइंग्स और हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना. यहां से हमारे पास आया कैपिटल का बैलेंस विच इज कैरिड फॉरवर्ड. इधर जब हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया, तो हमने बनाया कैपिटल अकाउंट और हमने बनाया करंट अकाउंट. ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस से शुरू किया, बैलेंस बीडी. यही बैलेंस सीडी बैलेंस हो जाता है. ये सिर्फ दो ही सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है, जब एडिशनल कैपिटल आए या कैपिटल का विड्रॉल हो जाए. दिस इज द केस ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड दिस इज द केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल. ठीक है, इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो बैलेंस BD/CD सेम रहेंगे. ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है और ये BD/CD के अलावा ये सब जो हो रहा है, ये अब करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है. तो हमारा यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, है ना, देन कमीशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन. हम वापस ले रहे हैं ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और यहां से हमारे पास आ रहा है बैलेंस CD. ठीक है, बैलेंस CD इज करंट अकाउंट का बैलेंस. अब हमने कैपिटल में भी टू कैश करके हमने विड्रॉल को रिकॉर्ड किया. करंट अकाउंट में भी हम ड्राइंग्स को ही कर रहे हैं. अब ये जो इसीलिए इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन निकल कर आता है कि ये ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दोनों में पैसा ही तो निकाल रहा है. देन हाउ डू वी डिफरेंशिएट व्हाट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग्स. ठीक है, इसके लिए ना देखो, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि whenever a partner is into business, for that matter कोई भी ओनर हो, whenever a partner is into business, हम बिजनेस में क्यों हैं? टू अर्न मनी, है ना. वी आर इन बिजनेस टू अर्न मनी. ये मनी हमको चाहिए क्यों? एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू टेक केयर ऑफ आवर डे टू डे एक्सपेंसेस, है ना. अब ओनर के साथ तो 70 खर्चे हैं. उसके बच्चों को स्कूल भी जाना है, उसको घर में खाना भी खाना है, उसको राशन भी भरना है, उसको गाड़ी भी चाहिए. ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए तो बिजनेस हो रहा है ना. तो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ओनर जो है वो बिजनेस के पैसे को यूज करता है. फाइन.
बट ओनर इज वाइज इनफ कि वो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा नहीं निकालता है. ओके. सो व्हेन वी टेक मनी, व्हेन द ओनर टेक्स मनी out of profits of the business for his regular expenses. बिजनेस के लिए वो उतनी ही मेहनत कर रहा है, वो भी चाहता है बिजनेस और बढ़े, है ना, इसीलिए वो सारा पैसा नहीं निकाल रहा है. तो जब अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, दैट बिकम्स ड्राइंग्स. उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. ठीक है. और ये ड्राइंग्स हमारा करंट अकाउंट में जाता है. लेकिन एक दूसरी सिचुएशन है, when owner withdraws money from business. When owner withdraws money from business because he wants to scale down. He wants to scale down his business. वो अपना बिजनेस कम करना चाहता है. ठीक है. अपना बिजनेस कम करना चाहता है. बिजनेस या तो स्केल डाउन करना चाहता है, या he wants to take out his investment. He is now not that interested in business. उसको कोई और बिजनेस वेंचर ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहां से पैसा निकाल कर वहां डालना चाहता है. सो मेनी पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से ओनर अब बिजनेस से पैसा निकालना चाहता है. He now either doesn't wants to continue, or he wants to reduce his share, या he wants to scale down his operations. That is what withdrawal of capital means. This is what happens when capital is withdrawn. ठीक है. अब इन देखो, इन दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ओनर पैसा ही निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बिजनेस में उतना ही इंटरेस्टेड है, सिर्फ अपने रेगुलर खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और इसीलिए तो बिजनेस हो रहा है. लेकिन सेकंड सिचुएशन में जब वो पैसा निकाल रहा है, वो बिजनेस को कम करना चाहता है, वो बिजनेस में से निकलना चाहता है. सो देर इज अ डिफरेंस इन इंटेंशन. Difference in intention of withdrawal. There is a difference in amount of withdrawal. ठीक है. And there is a difference on how that cash is managed. Intention drawings के केस में है regular expenses, है ना. Let's see, in case of drawings and in case of withdrawal of capital. Drawings के केस में वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस करना चाहता है. विड्रॉल के केस में वो स्केल डाउन करना चाहता है, वो मूव आउट करना चाहता है. ठीक है. पहला इंटेंशन का फर्क है. दूसरा अमाउंट ऑफ विड्रॉल. ड्राइंग्स का अमाउंट छोटा होता है, यूजुअली लेसर देन प्रॉफिट्स, है ना. बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए. विड्रॉल के केस में मैसिव अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इज विड्रॉल, ये ज्यादा होता है. ठीक है. कैश इज मैनेज्ड. ड्राइंग्स के केस में ऑफिस में जो रेगुलर कैश रखा हुआ है उसी में से विड्रॉल होता है, या बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वहां से पैसा विड्रॉ होता है और खर्चा होता है. लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्योंकि ज्यादा अमाउंट निकालना है, ये पैसा हो सकता है बिजनेस के पास ना हो. सो बिजनेस एसेट्स आर सोल्ड एट टाइम्स. इसके लिए एसेट्स को बेचा जाता है, ऑफिस बंद किए जाते हैं, फर्नीचर बेच दिया जाता है, या मशीनरी कम कर दी जाती है.
So these kind of situations happen when capital is withdrawn. तो ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग में, तो इट डजेंट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि विड्रॉल इज विड्रॉल, कैपिटल में से निकालना है, वो ड्रॉइंग्स हो या कैपिटल विड्रॉल हो, डजेंट मैटर्स। लेकिन दिस डिस्टिंक्शन मैटर्स जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इन दैट केस हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं विड्रॉल और करंट अकाउंट में दिखाते हैं ड्रॉइंग्स। देयर वी शुड नो द डिफरेंस। ओके, सो दिस इज what is happening in case of fixed capital account and fluctuating capital account, right? So do this and we'll do it further if required. Thank you.